Okay, yesterday we had a discussion on डिजाइनिंग प्रिंसिपल और फिर हमने डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बारे में जाना विच इज़ प्रेजेंट इन अ सेल्फ फोर्स। उसमें सबसे पहला रिलेशनशिप जिसके ऊपर हम लोगों ने वर्क किया था दैट इज सेल्फ रिलेशनशिप विच इज़ created by using a formula data type. Then we create a lookup relationship। वहाँ पे हमने समझा कि lookup relationship कैसे establish करते हैं और फिर lookup relationship किस तरह से work होता है। Then we establish the third relationship called as master detail relationship। उधर master detail relationship के बारे में हम लोगों ने पूरी चीज़ें समझ अंडरस्टैंड की। ओके, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और लुकअप रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या है? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में जो लिंक है वो मैंडेटरी फील्ड होती है, लुकअप में वो लिंक मैंडेटरी नहीं होती है। जहाँ पे रिलेशनशिप मैंडेटरी होगी वहाँ पे हम लोग मेजरली मास्टर डिटेल रिलेशनशिप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो जब भी आप परचेसिंग करोगे यानी कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेसिंग, देन आपको प्रोडक्ट, ये मैंडेटरी चीज होगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको परचेस करना ही पड़ेगा। और परचेस कौन करेगा? कस्टमर करेगा। सो परचेसिंग के लिए कस्टमर एंड प्रोडक्ट आर द टू थिंग्स विच आर बेसिकली मैंडेटरी थिंग। तो वहाँ पे हम लोग मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। एंड जहाँ पे मैंडेटरी रिलेशन नहीं आता है, ओके, तो वहाँ पे हम लोग लुकअप रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू create a project called as training management system. This is a use case which I create based on the designing principles and all those things. So training management system, we identify the app based on the client requirement। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। Then once you identify the app, you need to identify the S object. How will you find the S object? पहले आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिजनेस को समझने के बाद में उसमें जो की एंटिटीज होगी वो की एंटिटीज हमारे एस ऑब्जेक्ट्स होगी। नाउ ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम में की एंटिटीज और की पिलर्स कौन से हैं ये पर्टिकुलर बिजनेस के? तो स्टूडेंट इज द की पिलर, दैट्स व्हाई वी कंसीडर स्टूडेंट एज अ एस ऑब्जेक्ट। देन ट्रेनर इज अ अनदर की पिलर जो ट्रेनर कोर्सेज को कंडक्ट करवाएगा। देन कोर्सेज, विच डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज यू आर गोइंग टू ऑफर इन योर ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये की पिलर हो गया था। और जो कोर्सेज है वो कोर्सेज कंडक्ट करेंगे ट्रेनर और परचेस करेगा स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर एस ऑब्जेक्ट विच बेसिकली वी आइडेंटिफाई थ्रू आउट दिस कोर्स। अगर कुछ नया हमको आइडेंटिफाइड होता है तो हम उसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे। नाउ वी once you identify your object, then you need to identify what are the different fields are required for this particular object। और उसके लिए सबसे पहले हमको ट्रांजैक्शंस कंसीडर करने पड़ेंगे। जो ट्रांजैक्शंस हम लोग कंसीडर करेंगे उसके लिए कौन सा डेटा लगेगा और फिर डेटा के ऊपर से हम लोग जनरली फील्ड्स फाइंड आउट करते हैं। सो वी आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फॉर स्टूडेंट, दैट इज वी नीड टू रजिस्टर अ स्टूडेंट। then we need to register a trainer, and courses के लिए we need to register a courses under the trainer। and purchase में, परचेस के लिए हमने ट्रांजैक्शन फाइंड आउट किया दैट वी नीड टू परचेस अ कोर्स। सो दीज आर द फोर ट्रांजैक्शन दैट वी आइडेंटिफाई। सो व्हेन वी सेड रजिस्टर अ स्टूडेंट, ओके, व्हेन वी से रजिस्टर अ स्टूडेंट, सो स्टूडेंट को रजिस्टर करवाने के लिए ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में हमको कौन से डिफरेंट फील्ड्स की जरूरत होगी? अब देखो, डिपेंड अपॉन द बिजनेस फील्ड्स वैरी करेगी। अगर आप ये सेम चीज स्कूल के लिए या फिर कॉलेजेस के लिए डिजाइन करोगे तो वहां पे जब आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराओगे वहां पे मेजरली पेरेंट का नेम, पेरेंट मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये हम लोग लेते हैं। मदर्स नेम, फादर्स नेम, उनका मोबाइल नंबर भी लिया जाता है। ओके, और वो इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टूडेंट से रिलेवेंट करती है अगर हम लोग स्कूल और कॉलेज की बात करें। अब आपको पता है आपके कॉलेज में जब आप लोग एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे पेरेंट्स का नेम, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, उसमें फादर एंड मदर सारी चीज़ें, गार्डियन की इंफॉर्मेशन वो लेते हैं।
वेयर एज अगर आप किसी ग्रेट लर्निंग जैसे एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और पेरेंट्स का नेम वहां पे नहीं पूछते, क्योंकि वो पर्टिकुलर बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग है और स्कूल कॉलेजेस के बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस आपको टीसी देता है जो आपको नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काम में आएगा, वेयर एज ग्रेट लर्निंग जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे वो सर्टिफिकेट्स देते हैं, दे डोंट डू नॉट प्रोवाइड अ टीसी। ओके, एंड ये दोनों में डिफरेंस है। तो वहाँ पे जनरली पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं पूछते हैं। सो बेस्ड ऑन दी बिजनेस योर फील्ड्स इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज। अब देखो स्कूल कॉलेजेस के लिए भी एस ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट जाएगा, ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उधर भी स्टूडेंट एज एन एस ऑब्जेक्ट जाएगा, लेकिन फील्ड्स एक इसमें पेरेंट का फील्ड जाएगा, एक इसमें पेरेंट का फील्ड नहीं जाएगा। दैट यू नीड टू बी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन दी business. Okay, so we are going to create this training management system for the प्राइवेट पर्पस। ओके, एक प्राइवेट कंपनी है जो ये प्रोजेक्ट करवाना चाहती है। सो वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे। और हमने उसके लिए कुछ फील्ड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया है। फर्स्ट फील्ड हमने आइडेंटिफाइड की है, दैट इज योर स्टूडेंट आईडी which is a auto number. Then we identify a next field called student name, which is a text. Then we identify we required an email ID which having a data type called email. Then we required a phone number of a student. Then we required a username and password. Okay, so these two things we required. ओके, ये दो चीजें हमको लगेगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड देन फ्रॉम विच कंट्री दैट स्टूडेंट इज बिलोंगिंग टू एंड फ्रॉम विच स्टेट दिस स्टूडेंट इज बिलोंगिंग टू, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कोर्सेस रन होने वाले। सो यू शुड टेक द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट और you take the information where the student is belonging to. Okay, then we identify the second object called trainer. Trainer क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। सो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगी, ट्रेनर कोड विच इज ऑटो नंबर विच इज गोइंग टू बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। देन ट्रेनर का नाम लगेगा, ट्रेनर की ईमेल आईडी, ट्रेनर का मोबाइल नंबर, फ्रॉम विच रीजन दैट पर्टिकुलर ट्रेनर इज बिलोंग्स टू, विच स्टेट दैट पर्टिकुलर ट्रेनर इज बिलोंग्स टू। देन ट्रेनर का क्वालिफिकेशन क्या है और ट्रेनर को एक्सपीरियंस कितना है, ये इंफॉर्मेशन मेजरली हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर अ ट्रेनर ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट आता है कोर्स। टू रजिस्टर अ कोर्स व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि कोर्स का कोड होना चाहिए विच इज ऑटो नंबर, कोर्स नेम पाइथन का है, एमएल का है, सेल्सफोर्स का है, जावा का है, सी का है, सी शार्प का है, राइट, डॉट नेट का है। सो दैट इज द नेम ऑफ द कोर्स विच ऑफ टेक्स्ट टाइप। कोर्स का कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हो तो डेफिनेटली वो आप दे सकते हो। देन ड्यूरेशन इन हावर्स, कितने घंटों का कोर्स है। देन कोर्स फी, टोटल कोर्स फी कितना आएगा वो यहाँ पे देंगे। टोटल नंबर ऑफ सेशंस, आपने कभी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया होगा तो वहाँ पे आपको अन अकेडमी वगैरह जैसा है, बाईजूस का भी अपना खुद का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो उधर क्या होता है, उधर जब हम लोग कोई कोर्सेज परचेस करते हैं तो उसका ड्यूरेशन होता है 20 आवर्स, 10 आवर्स, 5 आवर, और फिर उस सेशंस को सॉरी वो पर्टिकुलर कोर्स को नंबर ऑफ सेशंस में डिवाइड किया जाता है। सो यू हैव 10 सेशन का, उसके अकॉर्डिंग टू वो क्या करते हैं कोर्सेज को सेशंस में डिवाइड करते हैं। सो हमने वो सेशन भी कंसिडर किया। देन हाउ मेनी स्टूडेंट रजिस्टर फॉर दिस कोर्स, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द परचेसिंग। ओके, सो दैट्स वाई वी पुट अप द फील्ड कॉल्ड रोल अप समरी। अब इधर देखो रोल अप समरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। सो रोल अप समरी इज द रिलेशनशिप जो हमने अभी तक के डिस्कशन में नहीं लाया है। अभी मैं आपको इसके बारे में हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। रोल अप समरी कब काम में आएगा, जब पेरेंट का डेटा चाइल्ड में यूज करते हैं तो लुकअप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में वो पेरेंट का डेटा चाइल्ड के अंदर आप फेच कर सकते हो। लेकिन चाइल्ड का डेटा अगर पेरेंट में फेच करना है तो वो रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है। फिर आप कैसे करोगे, तो आप समराइज्ड फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, वी कंसिडर कोर्स एज अ पेरेंट
ऑब्जेक्ट एंड परचेस इज अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो कोर्स की कंप्लीट डिटेल आप परचेस के अंदर फेच कर सकते हो, लेकिन परचेस की डिटेल अगर आपको कोर्स में फेच करना है तो कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आप वहां पे एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो आप क्या कर पाते हो, तो आप इसका समराइज्ड वर्जन यहाँ पे एक्सेस कर पाते हो। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ रोल अप समरी। जब हम ये रोल अप समरी लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल जब हम लेंगे इसका। देन वी कंसिडर अ ट्रेनिंग सेट। डेफिनेटली कोई कोर्स अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो वो कोर्स कोई ना कोई ट्रेनर क्या करेगा, कंडक्ट करेगा या फिर वो कोर्स ऑफर करेगा। सो वी रिक्वायर्ड अ ट्रेनर का नाम यहाँ पे विच शुड बी इन अ रिलेशनशिप विद अ ट्रेनर। ओके, एंड कोर्स विदाउट ट्रेनर पॉसिबल नहीं है ना, कोई ना कोई ट्रेनर वो कोर्स को कंडक्ट करेगा। सो इट मीन्स trainer is a mandatory thing for the course. That's why we apply a master detail relationship over here. Now let's move ahead and talk about the last object called purchase. Here we consider the few things relevant with the purchase. तो परचेस में हम क्या करेंगे, कोर्स परचेस करेंगे, एंड टू परचेस अ कोर्स वी रिक्वायर्ड अ परचेस आईडी विच इज ऑटो नंबर। देन वी रिक्वायर्ड अ कोर्स, कौन सा कोर्स हम परचेस कर रहे हैं। सो कोर्स इज अ मैंडेटरी थिंग, वो उसके बगैर आप परचेसिंग नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई मास्टर डिटेल। कौन परचेस कर रहा है, तो स्टूडेंट परचेस कर रहा है। सो स्टूडेंट इज ऑल्सो अ मैंडेटरी थिंग, सो इट इज इन अ रिलेशनशिप विद द परचेस कॉल्ड मास्टर डिटेल। then what was the original price, then what is the selling price, then what is the mode of payment, okay, credit card है, debit card है, online है, cash है, then rating, what sorts of rates you are going to give to that particular course, and what is the discount, okay. So how will you calculate selling price, original price पे discount apply करेंगे, then you will get a selling price. Now we are going to create all those things one by one, okay, and then we develop our ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब इधर ये ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम जब तक हमारा लास्ट डे नहीं आएगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा। जो जो चीज हम लोग सीखेंगे वो सारी चीज हम लोग ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम में अप्लाई करेंगे। जो नया चीज सीखा वो ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम में अप्लाई करेंगे, राइट। So first of all, I need to create an application whose name is Training Management System. And we know that how to create application in a Salesforce org. So go to your Salesforce org, go to your setup, okay, and then just search for the app manager. So go and search in app manager in a quick find. Now you can see the app manager is present over here. Now click on app manager and simply create a training management system. And to create a training management system, we have new lightning app button over here. Click on new lightning app. Now these are the things which are mandatory. तो ये चीजें हम लोगों को फिलअप करनी है। लेट्स गिव द नेम टू द एप्लीकेशन। क्या नाम था हमारा, ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इन शॉर्ट मैं लिखता हूँ TMS। सो TMS स्टैंड फॉर ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। Developer name will populate automatically based on the app name. If you want to provide any description, you can provide it, training management system, okay. Then if you want to select a theme color, you can select from here, okay. So let it be, इसको ऐसे ही रहने देते फिलहाल। Now click on next. Now it will ask about the app option। उसमें पहला आता है नेविगेशन, सेटअप, सपोर्ट एंड ऐप इंफॉर्मेशन। तो बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है। स्टैंडर्ड नेविगेशन डेस्कटॉप एंड फोन दोनों पे रन होना चाहिए। सेटअप, फुल सेटअप हम लोगों को चाहिए, एंड फिलहाल ये ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। सो कीप ऑल दोज थिंग्स एज इट इज। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। then it will ask you to add a utility. Right now we don't create any utility for the application, so keep as it is. Now if you, it will ask you what different type of tabs do you want to add in your application, okay। अब ना बेसिकली हमने जब ये स्टार्ट किया था तब मैंने एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखाया था। सो वी ऑलरेडी हैव अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओवर हियर। लेट्स सर्च। बेसिकली वो हमने ऐड किया है, इसके वजह से मुझे ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को चूज करना पड़ रहा है, और अदरवाइज नो नीड टू सर्च द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट।
और एक स्टैंडर्डाइजेशन बोलता है कि एक होम बटन आपके एप्लीकेशन में होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड अ होम बटन। ओके, नाउ होम बटन ये मेरा फर्स्ट टैब रहेगा एंड स्टूडेंट ये मेरा सेकंड टैब रहेगा। सो आई विल अरेंज बाय यूजिंग दिस अप एंड डाउन बटन एंड देन फाइनली आई नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब इधर ये पूछेगा कि ये एप्लीकेशन कौन से यूजर को शो करने का, मतलब कौन से प्रोफाइल को शो करने का। एंड वी नो दैट वी लॉग इन it as a system administrator, so we will select system administrator and add to my profile. So you can see the profile is added over here correctly. Now finally you need to click on save and finish to create your application. Now you can see TMS. देखो, we create a application called TMS. If you go to your app launcher, okay, go to your on a SaaS site, you can search it for TMS. ऐसे है ना, you can search it for TMS. इधर भी आप सर्च कर सकते हो. Let's search for the TMS, that is training management system, and just click on that to open the training management system. Now you can see your home button is there as well as student tab is there. If you click on student, you can see already students are registered over here. जो हमने पहले किया था, अब क्या है, टैब कॉमन है, एस ऑब्जेक्ट कॉमन है, उसकी विजिबिलिटी आप सिर्फ अलग अलग टैब्स के अंदर देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दे सकते हो। तो डेटा रिमेन कीप एज इट इज, वो चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब इसमें कौन से फील्ड्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किए वो देख लेते हैं। सो वी ऑलरेडी बीन क्रिएटेड स्टूडेंट नेम, email id and a degree, and what sorts of data we required student id है, name है, email id है, we required phone number, username, password, country and state. Let's create all those things one by one, and to do that once again go to your developer org, go to your setup. Okay, अब इधर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर में एंड सर्च फॉर द object called student. Okay, so here I search for the student. Now go to your fields and relationship and then click on new to create a new field. Okay, अभी कौन सा फील्ड बनाएंगे हम लोग, तो हमारे पास में ये एक्सेल शीट है, इधर देख लेंगे। अभी अब लोग क्रिएट करेंगे मोबाइल नंबर whose data type is phone. Okay, so let's go to your developer org, select your data type. Now I'm going to select a data type called phone, then need to click on next. Now it will ask you about field label. Okay, so I'm going to pass it as a mobile number. Field name will automatically populate. अब देखो, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे है ना, तब आपको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, आपका एसक्यूएल होता है ना, वैसे सेल्सफोर्स खुद का एक एसओक्यूएल लैंग्वेज देता है कॉल्ड एज सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो आप डेटाबेस के साथ में क्वेरी फायर करके वैल्यूज को रिट्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग एसओक्यूएल। तो एसओक्यूएल में आपको जो फील्ड नेम्स देने होते हैं, तो फील्ड लेबल नहीं देना होता, आपको फील्ड नेम्स देने होते हैं। ओके, अगर आप फील्ड लेबल दोगे वहां पे तो आपका डेटा रिट्राई नहीं होगा। सो बेसिकली दिस फील्ड नेम्स आर यूज फॉर द इंटरनल ऑपरेशन एंड फील्ड लेबल इज फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ये चीज समझ लेना आप, इसीलिए इसमें स्पेसिंग अलाउड नहीं होता है। इफ यू वांट टू मेक दिस फील्ड एज अ रिक्वायर्ड, यू कैन choose this option, otherwise keep as it is, then click on next. Now you need to select the profile, to which profile you want to show that particular mobile, so mobile number. So I am going to select a profile called system administrator. बाकी के profiles के लिए हम लोग ये show नहीं करेंगे. Now click on next. Now at the last you can see this particular मोबाइल नंबर इज नाउ एडेड टू अ स्टूडेंट लेआउट। ये याद रखना, क्योंकि जब लेआउट में बताऊंगा तब ये आपको याद आना चाहिए।
Now next I need to click on save and new. Why save and new? Because I need to create another field called as username. So I just click on use save and new to save that particular field. Now next field is your username whose data type is text. So I am going to select text as a data type. Click on next to create a username. Let's have a name called user name. Length you need to specify the length. So user length at max 20 characters का हम लोग allowed कर रहे हैं. If you make that particular field as a mandatory field, you can choose the first option that is called required. Otherwise keep as it is. आपको इसको केस सेंसिटिव रखना है नहीं रखना है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, तो आप ये ऑप्शन चूज करके फिर इसमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. ओके, एंड नहीं रखना है तो कीप एज इट इज एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब बेसिकली क्या होता है, यूजर नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो केस सेंसिटिवनेस हम लोग ऐड कर देते हैं. वो चेक करेगा कि दैट यूजर नेम इज रिपीटिंग और नॉट. ओके, डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा वो सेकंड ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो. कौन सा, ये प्रीवियस जाके दिखा देता हूँ, दिस वन, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. तो आप इसको चूज करो तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा. इफ यू वांट टू अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू यू कैन अनचेक दिस, तो डुप्लीकेट वैल्यू आपके अलाउड हो जाएंगे. सो फिलहाल तो हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे. जैसे जैसे प्रोजेक्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वैलिडेशंस पे जाएंगे तब ये कर लेंगे इसको. नाउ आई वांट टू प्रोवाइड अ विजिबिलिटी टू द प्रोफाइल. तो विजिबिलिटी हमको किसको देने का है, सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को देने का है. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. क्लिक ऑन नेक्स्ट. Now you can see this particular field is now added to the student layout. Now click on save and new. Next field आता है password. Now to create a password, what is the data type of password is secret. Now we need to select secret. अब इधर देखो, secret मतलब text encrypted. Okay, so we need to select the data type called text encrypted, or then click on next. Then you need to give the label called password. Length of password is of 10 characters. If you want to give any description you can provide that description. If you want to make it as a required you can select this option, then click on next. Review all error, something has been, हाँ okay. अब देखो इधर, अगर जैसे ही आपने टेक्स्ट इनक्रिप्टेड एज अ डेटा टाइप चूज किया तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिले, मास्क टाइप एंड मास्क कैरेक्टर. सो मास्किंग कैसे देने का है, अब देखो इधर वी हैव वेरियस ऑप्शन. मास्क ऑल कैरेक्टर यानी कि सारे के सारे कैरेक्टर आपको हाइड करने के है क्या. तो अगर पासवर्ड है तो हम लोग चूज करेंगे मास्क ऑल कैरेक्टर. सेकेंड ऑप्शन आता है लास्ट फोर कैरेक्टर क्लियर्स, मतलब आखिरी के चार छोड़ के पहले वाले सारे दिखाने के, मतलब बेसिकली ये आधार कार्ड वगैरह के लिए यूज होता है. क्रेडिट कार्ड नंबर होगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से शो करेगा. इंश्योरेंस नंबर होगा तो उसको शो करने का उसका तरीका होता है, वो उसको ऑटोमेटिकली आप सिर्फ चूज करो वो उसको शो करने का तरीका ऑटोमेटिकली ले लेगा. सोशल सिक्योरिटी नंबर है, सोशल इंश्योरेंस नंबर है, all these things having their own way to show the डेटा. ओके, एंड यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, तो फिर वो डेटा उसके अकॉर्डिंग टू शो होगा. राइट नाउ हम पासवर्ड कर रहे हैं तो हमको सारे के सारे कैरेक्टर मास्क करने पड़ेंगे. एंड टू मास्क वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू यूज स्टार और यू कैन यूज अ क्रॉस ऑप्शन. सो आई एम गोइंग टू चूज स्टार. तो एक एग्जांपल भी इधर आया है कि इस तरह से आपका जो पासवर्ड है वो मास्क हो जाएगा. इफ यू चूज द क्रॉस देन इधर देखो क्रॉस 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 आएंगे टू मास्क द पासवर्ड. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. Now I made this field as a mandatory, that's why visibility is given to all profile automatically. And now this field is added to the student layout. Now once again I am going to click on save and new to create a next field called as country, which is a pick list. Okay, and now इधर हमको चूज करने का है पिक लिस्ट. सो दिस इज अ पिक लिस्ट डेटा टाइप. पिक लिस्ट यानी कि ड्रॉप डाउन. ओके,
then click on next. Now you need to assign a name called country. Okay, now you have a two options. Use a global pick list. तो आप ग्लोबल पिक लिस्ट बना सकते हो, मैं ये बाद में बता दूंगा, और वो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है, आपको वेरी करना है पिक लिस्ट को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करो, सेकंड ऑप्शन चूज करो। सेकंड ऑप्शन आते ही क्या होगा कि आप यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन में जो जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज चाहिए वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड few country names over here. Let's say India, USA, then UK, then Russia. Okay, then एक और साउथ अफ्रीका। चलो ठीक है, so that is sufficient. Now you can see the country name is populated automatically. Now click on next. Assign a visibility. I am going to assign the visibility to only system administrator. Click on next, and you can see this field also added into this layout. Now click on save and new. Now the last field is my state. Okay, it is also a pick list, so I am going to choose another data type called as pick list. Then click on next. Then I am going to choose state as a field label. Once again I will choose the values. Now let's have some values: MP, UP, Maharashtra, then AP called Andhra Pradesh, Telangana, and Florida, Orida, जो भी आपको ऐड करने का, you can add according to your countries. And then finally you need to click on next. So अभी देखो जो जो वैल्यूज हमने वो पिक लिस्ट में डाले एंटर कर करके, सो यू शुड अप्लाई एंटर ओवर हियर फॉर द न्यू वैल्यू। ओके, अब एंटर नहीं करोगे, एक ही लाइन में अगर यूज करोगे तो वो सेपरेट वैल्यू करके कंसिडर नहीं होगा, वो सिंगल वैल्यू कंसिडर करके होगा। Okay, and if you want to arrange these things by using a alphabetical order, so you can have an option, तो आप इसमें से ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। डिस्प्ले वैल्यू अल्फाबेटिकली, तो ये वैल्यूज क्या होगी जब उधर शो होगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। ओके, एप्लीकेशन जब आप यूज करोगे तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाएगा। नाउ नेक्स्ट, क्लिक ऑन next, then choose a profile as a system administrator, and then finally click on next. Now this field is also added over here. Now click on save. Now all the fields is created successfully. अब क्या करेंगे, बस साथ साइड में जाना है, रिफ्रेश करने का है, and you can see whether all the fields are available or not. And to do that, एक एंट्री करके देखते हैं, just click on new. Now you can see we have student name, email ID, degree, then phone number, username, password mandatory है इसलिए ये रेड कलर का सिंबल यहाँ पे आया है। देन वी हैव अ कंट्री, इस पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो इंडिया, यूएसए, यूके, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर द कंट्रीज विच वी एडेड इन अ पिक लिस्ट। तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ गया। एंड नाउ यू कैन सी द स्टेट विच वी एडेड ओवर देयर इन अ पिक लिस्ट, और उसमें हमने ऑप्शन चूज किया था कि वी हैव टू सॉर्ट दैट pick list by the alphabetical order. So now you can see A, M, M, T, U. So it is sorted by using a alphabetical order. So in this way we are able to create our object as well as the fields in a training management system. अब क्या करने का, अभी मेरे को ट्रेनर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाने का है, and I am going to create all those fields relevant with the trainer. Okay, and to do that, once again I need to go to my pass side called as platform as a service. फिर उधर क्या करेंगे, उधर ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, and then we create a new object called trainer. Okay, so trainer नाम का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड टू डू दैट, अभी हम क्रिएट ऑब्जेक्ट में गए एंड इधर फील्ड लेबल पास किया, ट्रेनर का प्लूरल पास करना है ट्रेनर्स। ओके,
Why trainers? Because it is now internally connected with your tabs. तो tabs का नाम इधर से पास हो रहा है. Now here first field custom field नहीं standard field कौन सी है? Trainer code. Okay, trainer code. So I am going to give it as a trainer code, and that trainer code should be an auto number. That's why I am going to change the data type from text to auto number, and let's have a trainer ID is T-000, and the number will start from 001. Then choose all the options, all the possible options over here, and these are the things which is not mandatory. ये नहीं भी किया तो चलेगा, and then click on save to create a trainer object. ठीक है, अब क्या होगा? ट्रेनर ऑब्जेक्ट बन गया. वी नीड टू क्रिएट अ टैब एंड विच इज गोइंग टू बी एड इन अ टीएमएस. ओके, एंड टू डू दैट वंस अगेन गो टू योर सेटअप के होम में जाने का है, फिर टैब पे क्लिक करने का है. टैब, सर्च फॉर द टैब, सिंपली क्लिक ऑन टैब्स. Now you can see these are the things which we already been created. अब हम हमारा खुद का कस्टम टैब बनाएंगे फॉर अ ट्रेनर ऑब्जेक्ट. सो क्लिक ऑन न्यू. न्यू पे क्लिक करने के बाद में एक विंडो आएगा. उधर वो आपको पूछेगा कि आप कौन से टैब, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए आप टैब बनाना चाहते हो. सो इट विल आस्क फॉर ऑब्जेक्ट. सो क्लिक ओवर हियर. नाउ यू कैन सी ट्रेनर इज ऑब्जेक्ट. सिलेक्ट अ स्टाइल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ट्रेनर के लिए let's consider, let's select the computer as a tab style. Then keep all the data as it is. Click on next. Then it will ask you कि ये टैब किसके लिए बाय डिफॉल्ट ऑन रखने का है. तो हमको ऑन रखने का ओनली फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. एंड टू डू दैट आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल make default off for all the profiles. Then select the second option to make the tab visibility on for each profile individually. And now I'm going to the प्रोफाइल कॉल्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और इधर जाके हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट ऑन कर देंगे ताकि ये टैब विजिबल हो किसको? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? हम है ना. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन नेक्स्ट यू हैव टू चूज द एप्लीकेशन. कौन से एप्लीकेशन में ये टैब आपको फिट करने का है. सो बाय डिफॉल्ट इसने सारे एप्लीकेशन को चूज किया. हमको सारे एप्लीकेशन में ये नहीं देने का है. हमको किसको देने का है? सिर्फ ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम को देने का है. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू चूज ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड देन क्लिक ऑन सेव. नाउ व्हेन यू डू दैट, तो टैब जो है वो आपके एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है. नाउ यू कैन सी द ट्रेनर टैब present over here. And to check this, go to your SaaS side और open करो आपका application called TMS which we already be opened in a new tab. तो इसको सिर्फ रिफ्रेश करते हैं. जैसे रिफ्रेश करेंगे यू कैन सी, एक मिनट, रिफ्रेश दिस. समथिंग वेंट रॉन्ग का. ये इधर टैब आना चाहिए था ट्रेनर नाम से. हाँ, नाउ यू कैन सी द ट्रेनर. अब ये देखो इधर मैं रिफ्रेश कर रहा था फिर भी ये नहीं आ रहा था. इसका रीजन क्या है? बेसिकली आप सिंपल रिफ्रेश जब करते हो तो कभी कभी क्या होता है, आपका ब्राउजर आपके कुकीज का डेटा उठा के ही आपको शो करता है. और आपको अगर वो कुकीज का डेटा नहीं करने का है तो यू हैव टू ऑप्शंस. आइदर यू गो टू योर ब्राउजर हिस्ट्री और उधर से सारी कुकीज आप डिलीट कर दो, और अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो जनरली रिफ्रेश करते हो फिर ऐसा करो कंट्रोल शिफ्ट एंड आर. ये रिफ्रेश करने से क्या होगा, वो कुकीज को बाईपास करके एक्चुअल डेटा को फेच करता है तो रिफ्लेक्शंस आ जाएंगे. नाउ यू कैन सी ट्रेनर ऑफ tab is added in my training management system. Now next is to add all those fields, right, which is relevant with the trainer object. Now तो अब मैं एक आपको नया चीज सिखाऊंगा आपको. अभी हमको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना होता है, फिर हमको ऑब्जेक्ट को सर्च करना होता है. कौन सा ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे हम लोग? यहाँ पे ट्रेनर नाम का ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे और फिर सर इधर क्लिक करेंगे.
इधर क्लिक करने के बाद में फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे और एक एक हमारे फील्ड्स को इसके अंदर ऐड करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू थिंग जो आप यूज करके इसके अंदर फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो, इवन ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ टैब नहीं क्रिएट कर पाओगे। और उसको कहते हैं हम लोग स्कीमा बिल्डर। उसको क्या कहेंगे? स्कीमा बिल्डर। सो यू नीड टू सर्च फॉर दैट कॉल्ड एज स्कीमा बिल्डर। नाउ यू विल सी ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स के अंदर एक स्कीमा बिल्डर नाम का ऑप्शन आएगा। यू हैव टू सिलेक्ट दैट स्कीमा बिल्डर। अब ये स्कीमा बिल्डर क्या करेगा? आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपको कोई फील्ड ऐड करने का है तो वो फील्ड आप इधर से ऐड कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। नाउ दिस इज अ स्कीमा बिल्डर। इधर आप देख सकते हो दिस इज द पैनल वेयर ऑल द ऑब्जेक्ट एंड देयर फील्ड्स। तो ये सारा स्टफ यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इधर ये है एपीआई एनोमली इवेंट स्टोर। ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है। ओके। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी फील्ड्स प्रेजेंट है। नाउ अब हमको क्या करना है? हमको हमारे ऑब्जेक्ट्स को देखने का है। सो इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज अ स्कीमा बिल्डर। ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द वेरियस ऑप्शंस प्रेजेंट ओवर हियर। ओके। तो उसमें से पहला है क्लोज, टू क्लोज दैट पर्टिकुलर स्कीमा बिल्डर। देन ऑटो लेआउट ऑप्शन, व्यू ऑप्शंस, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके नीचे आप देख सकते हो देयर इज अ बटन कॉल्ड एलिमेंट्स एंड अनदर बटन कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर एलिमेंट्स ऐड करने, यू कैन सिलेक्ट दिस एंड यू हैव वेरियस एलिमेंट्स ओवर हियर। यू जस्ट ड्रैग दिस एंड ड्रॉप इनटू द ऑब्जेक्ट एंड वो फिर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे, सॉरी एलिमेंट्स क्रिएट कर पाओगे। एंड इफ यू वांट टू ऐड एन और इफ यू वांट टू चेक दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पैनल तो आप इधर से वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। सो here we have all objects, so I don't want to see all objects. So first of all इसको मैं क्या करूंगा? इधर से आप सिलेक्ट ऑल करोगे तो सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से डिसअपियर हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू चूज अ कस्टम ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो हमने बनाया वही ऑब्जेक्ट्स दिखाने चाहिए। नाउ आई नीड टू क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट विच आई वांट टू सी। तो मुझे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट चाहिए और मुझे एक ट्रेनर ऑब्जेक्ट चाहिए। नाउ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअली अपियरिंग। तो इधर ये देखो, इधर ये कंप्लीट छोटा सा पैनल है, ये कंप्लीट व्यू दिखाएगा आपको। नाउ जैसे आप इधर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग टू ये पैनल पे हम लोग घूम सकते हैं। नाउ यू कैन सी वी हैव अ ट्रेनर ऑब्जेक्ट एंड वी हैव अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विद अस। समझा? तो ये देखो, सो दीज आर द थिंग्स। अब इधर देखो, जो जो फील्ड मैंडेटरी है वो रेड मार्क्स में यहाँ पे शो हो रही है। सो पासवर्ड इज अ मैंडेटरी थिंग, दैट्स व्हाई इट इज इन अ रेड मार्क। स्टूडेंट नेम इज अ मैंडेटरी थिंग, that's why it is marked in a red mark. Created by a mandatory thing, that is the reason it is marked as a red mark. Okay. अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास में एक ट्रेनर ऑब्जेक्ट है। इस ट्रेनर ऑब्जेक्ट के अंदर हमको फील्ड्स क्रिएट करने के हैं। फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल, मोबाइल। Now to create a field email, sorry, trainer name, we required a text type of field. Okay. So अब इधर text type का एक field add करने का है, and to do that we have element options over here. So click on elements. Now इधर आपके पास में सारे elements present हो गए जो data type हो गए. So you can search for the text element. Here you have a text element. You just drag this and drop it into your trainer object simply. Now it will ask you about the field label. Okay, so field label is trainer name. So I'm going to copy this and paste it over here. Trainer name automatically populate हो गया, field name automatically populate हो गया. What should be the length of trainer name? कितने characters के trainer name होने चाहिए? So I said 40 character is the total length. तो वहाँ पे जो procedure कर रहे थे ना हम लोग, वही shortcut में यहाँ पे हो रहा है. Then do you really want this particular field as a required? You can make this required from here. And if you don't want this field as a required, you don't need to select this. And then you need to click on save to add this particular field into that object.
so I will make this field as a mandatory क्योंकि trainer का नाम होना जरूरी है. So make this field as a mandatory and click on save. Now you can see the trainer name is added into your trainer object. Okay, so go to your SaaS side, refresh this, go to your trainer tab. So go to your trainer tab and click on new. Now you can see there is a field called trainer name is appeared over here, right? So it is the simple way to add the fields. यहाँ से आप fast में number of fields को add कर सकते हो. Now next field is email. Now I'm going to add email. So I will drag this email and put it into the object. जो object में आप बनाना है उसी object पे जाके place करने का है. Okay, दूसरे object पे place करोगे तो उधर जाके वो field create होगा. Field name is email, trainer email. Field label field name label is trainer email. Field name automatically populate हो गया. If you want to make this required, you can choose. Otherwise, email ID इतना required नहीं है. So save this. Now you can see email ID is added over here. फिर next field क्या है हमारा? Mobile number, and mobile number generally phone से represent होता है. So I will choose the phone as an element, drag this and drop to the hello. Hello, do you hear me? Hello guys, do you hear me? चैटबॉट में एटलीस्ट यस करके डाल दो. हाँ ओके. एक्चुअली इधर का पावर कट ऑफ हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं मतलब कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट. फील्ड लेबल. व्हाट इज द फील्ड लेबल? क्या बनाना है अभी हम लोगों को? मोबाइल नंबर. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस फील्ड एंड पेस्टेड ओवर हियर. लेट्स से फील्ड मोबाइल ट्रेनर मोबाइल नंबर. नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा इधर. हाँ ओके. Then if you want to make this required, you can. Otherwise save this. Now the next field is created. अब next field क्या है? Pick list with a name country. Now you just select the pick list from here. Now you can see the pick list element. Drag this and drop over here. Give it a name as a country. Okay. Field label, field name automatically populate हो जाएगा इधर. Okay, then it will ask you about the values. Okay, we are going to provide values to this. Let's say India, USA, UK, then Russia, and then SA, South Africa. If you want to make or sort this particular pick list by using alphabetically, you can select this first. Okay, and then click on save. Now your pick list being added over here. Next आता है state, and to add the state we required a element called pick list. तो वापस से pick list को उठाएंगे, drop करेंगे. Now here I am going to add a name label as a state. Name automatically आया. Now here we need to pass the values. Let's say वापस से MP, UP, Maharashtra, then we need to add one more. Let's say AP. AP हो गया था शायद, नहीं, तेलंगाना. Now I'm going to display this value alphabetically and save this. Now next is qualification, जो है text type का. So you need to choose text element, drag and drop there, and you just give it a name called qualification. Okay, field name automatically populate.
टोटल लेंथ कितना होगा क्वालिफिकेशन का, डिग्री नाम, डिग्री ले रहे हैं आप लोग, डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन इज ऑफ विच इज ऑफ 20 कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, मतलब मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए। देन क्लिक ऑन सेव टू ऐड दिस पर्टिकुलर फील्ड इनटू माय ट्रेनर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आएगा एक्सपीरियंस विच इज इन अ नंबर, एक्सपीरियंस इन ईयर्स। सो नंबर्स, नंबर्स यहाँ पे इसको ड्रैग किया, ड्रॉप किया, एंड आई विल pass it as a experience। okay, field name automatically populate। कितने कैरेक्टर्स का एक्सपीरियंस, 99 ईयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस एक आदमी को नहीं हो सकता है ना। सो आई वुड से लेंथ ऑफ 3। if you want to make it required, you can choose this option, otherwise keep as it is। now click on save। now you can see this is pretty quick operations। okay, उधर जाके एक एक फील्ड ऐड करना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इधर से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, next is our course। this is an object। now we will try to create an object by using a schema builder। okay, और वो करके हम लोग रुक जाएंगे, फिर कल, नहीं तो कल ही स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, आज यहाँ पे रुक जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा काम है मुझे। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। तो कल क्या करेंगे, कल कोर्स ऑब्जेक्ट स्कीमा बिल्डर का यूज करके करेंगे। देन परचेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सारी फील्ड्स क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। ओके, एंड देन फिर हम लोग इन डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख सकते हो स्टूडेंट, एंड देन आई क्लिक ऑन न्यू। so whatever the field I created over here, that is going to display। अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करने का है। ओके, अगर कोई फील्ड आपने ऐड किया और वो ऐड करने के बाद में आपके पैलेट पे शो नहीं हो रहा है, तो शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। वो सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो कोर्स में इंक्लूड होती हैं। वो सारी चीजें हम लोग, नए चीजें कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। तो आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा स्कीमा बिल्डर। स्कीमा बिल्डर किस काम में आता है, स्कीमा बिल्डर आता है टू क्रिएट द एलिमेंट्स। okay, by just drag and drop option you are able to create the elements। so आप उसमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो, right। and to do that we have option called elements as well as objects with us। and जो ऑब्जेक्ट्स आपको डिस्प्ले करवाने हैं वो ऑब्जेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करो, वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शो हो गए। और जो ऑब्जेक्ट आपको डिस्प्ले नहीं करवाने उसको डिससिलेक्ट करो तो ऑब्जेक्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिलेक्ट ऑल बोल दिया तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा बिल्डर। कल हम लोग आगे का प्रोजेक्ट करेंगे और फिर उसके अंदर हम लोग और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल पेज लेआउट हो गया, देन सर्च लेआउट हो गया। ओके, ऑल दोज ऑप्शंस वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो इधर आप छोटा सा मैं दिखा दूं आप लोगों को। इफ यू गो टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड लेट्स click on any one of the object which we have created, or let's say student। एंड इधर आप देखो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप एंड डिटेल, ये दो ऑप्शंस हमको पता है। डिटेल में ये कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आई, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में फील्ड्स के बारे में आई। देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दोज थिंग्स वन बाय वन। पेज लेआउट क्या है, देन व्हाट इज दिस सर्च लेआउट क्या है, एंड ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू एक्सप्लोर वन बाय वन। ओके, so I'm going to finish this session or concluding